Types. Main article, Nuclear Weapon Design. The Trinity test of the Manhattan Project was the first detonation of a nuclear weapon, which led J. Robert Oppenheimer to recall verses from the Hindu scripture Bhagavad Gita: "If the radiance of 1,000 suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one and become death, the destroyer of worlds." J. Robert Oppenheimer, principal leader of the Manhattan Project, often referred to as the father of the atomic bomb. There are two basic types of nuclear weapons: those that derive the majority of their energy from nuclear fission reactions alone, and those that use fission reactions to begin nuclear fusion reactions that produce a large amount of the total energy output. Fission weapons. The two basic fission weapon designs. All existing nuclear weapons derive some of their explosive energy from nuclear fission reactions. Weapons whose explosive output is exclusively from fission reactions are commonly referred to as atomic bombs or atom bombs, abbreviated as A-bombs. This has long been noted as something of a misnomer, as their energy comes from the nucleus of the atom, just as it does with fusion weapons. In fission weapons, a mass of fissile material, enriched uranium or plutonium, is forced into supercriticality, allowing an exponential growth of nuclear chain reactions, either by shooting one piece of subcritical material into another, the gun method, or by compression of a subcritical sphere or cylinder of fissile material using chemically fueled explosive lenses. The latter approach, the implosion method, is more sophisticated and more efficient, smaller, less massive, and requiring less of the expensive fissile fuel than the former. A major challenge in all nuclear weapon designs is to ensure that a significant fraction of the fuel is consumed before the weapon destroys itself. The amount of energy released by fission bombs can range from the equivalent of just under a ton to upwards of 500,000 tons, 500 kilotons, of TNT, 4.2 to 2.1 by 106 GJ. 10. All fission reactions generate fission products, the remains of the split atomic nuclei. Many fission products are either highly radioactive, but short-lived, or moderately radioactive, but long-lived, and as such, they are a serious form of radioactive contamination. Fission products are the principal radioactive component of nuclear fallout. Another source of radioactivity is the burst of free neutrons produced by the weapon. When they collide with other nuclei in the surrounding material, the neutrons transmute those nuclei into other isotopes, altering their stability and making them radioactive. The most commonly used fissile materials for nuclear weapons applications have been uranium-235 and plutonium-239. Less commonly used has been uranium-233. Neptunium-237 and some isotopes of americium may be usable for nuclear explosives as well, but it is not clear that this has ever been implemented, and their plausible use in nuclear weapons is a matter of dispute. 11. मुख्य लेख परमाणु हथियार डिजाइन। मैनहट्टन परियोजना का ट्रिनिटी परीक्षण परमाणु हथियार का पहला विस्फोट था, जिसके कारण जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता के श्लोक याद आए: यदि एक साथ हजारों सूर्यों की चमक आसमान में फूट पड़े, तो वह उस शक्तिशाली सूर्य की महिमा के समान होगा जो मृत्यु बन गया है, जो संसारों का विनाशक है। मैनहट्टन परियोजना के प्रमुख नेता जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को अक्सर परमाणु बम का जनक कहा जाता है। परमाणु हथियारों के दो मूल प्रकार हैं, वे जो अपनी अधिकांश ऊर्जा अकेले परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं, और वे जो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को शुरू करने के लिए विखंडन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जो कुल ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। विखंडन हथियार। दो मूल विखंडन हथियार डिजाइन। सभी मौजूदा परमाणु हथियार अपनी विस्फोटक ऊर्जा का कुछ हिस्सा परमाणु विखंडन प्रतिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं। वे हथियार जिनका विस्फोटक उत्पादन विशेष रूप से विखंडन प्रतिक्रियाओं से होता है, उन्हें आमतौर पर परमाणु बम या परमाणु बम, संक्षिप्त रूप में ए-बम, कहा जाता है। यह लंबे समय से प्रचलित है। इसे एक मिथ्या नाम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा परमाणु के नाभिक से आती है, जैसा कि संलयन हथियारों के साथ होता है। विखंडन हथियारों में विखंडनीय पदार्थ,
समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम के द्रव्यमान को सुपरक्रिटिकलिटी में मजबूर किया जाता है, जिससे परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियाओं की घातीय वृद्धि होती है, या तो उपमहत्वपूर्ण पदार्थ के एक टुकड़े को दूसरे में शूट करके, बंदूक विधि, या रासायनिक रूप से ईंधन वाले विस्फोटक लेंस का उपयोग करके विखंडनीय पदार्थ के उपमहत्वपूर्ण क्षेत्र या सिलेंडर के संपीड़न द्वारा। बाद का दृष्टिकोण विस्फोट विधि पहले की तुलना में अधिक परिष्कृत और अधिक कुशल, छोटा, कम भारी और कम महंगे विखंडनीय ईंधन की आवश्यकता है।